CBSE Mathematics Class 12, Exercise 5.1, Question number 14. Discuss the continuity of the function where f means function f where function is defined by fx is equal to 3, 4, 5. दिया हुआ है. When fx is equal to 3 at that time, our interval will be 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1. Means देखिए 0 से लेकर 1 तक 0 इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है. So fx is equal to 3 if 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1. fx is equal to 4 if 1 is less than x and x is less than 3. देखिए here 1 and 3, these two are excluded. 1 और 3 को लिया नहीं गया है, means in between. Now fx is equal to 5 if 3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10. अब देखिए 3 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है. मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट्स कवर करेगा. एट दैट टाइम इट्स ए फंक्शन विल बी इक्वल टू 5. The given function is defined at all points of the interval 0 to 10. 0 से लेकर के 10 तक that can be defined. So let C be a point in the interval 0 to 10. 0 से लेकर 10 के बीच में एक पॉइंट हमने एज्यूम किया. Let that point is C. Case 1, if 0 is less than or equal to C and C is less than 1, then FC is equal to 3. देखिए ये फर्स्ट वाला जो है 0 is less than or equal to x and x is less than 1. Limit x approaching to C, fx is equal to limit x approaching to C 3 and it is 3. क्योंकि 3 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें कोई x तो है नहीं जिसके जगह पर आप रखेंगे कोई वैल्यू. So limit x approaching to C, fx is equal to fc. अब देखिए fc 3 आया और fx की वैल्यू रखा तो अभी 3 आया. Therefore, the function is continuous in the interval. This is closed interval 0 से लेकर के 1 तक. हमने 1 तक ही लिया था, जबकि वहाँ पर दिया हुआ है. जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे आप, देन अगर दूसरे तरफ चला जाएगा. Now come to the case number 2. Case 2, if C is equal to 1, then f3 is equal to 3. The left hand limit of function at x is equal to 1 is limit x approaching to -1. Means left hand limit का ये -1 ऐसे इंडिकेट किया जाता है. fx is equal to limit, पहले तो हम लिखेंगे fx, फिर उसके बाद limit x approaching to -1 और उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज 3 वो लिख देंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 3. नाउ द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 इज x अप्रोचिंग लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 fx लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 4. अब देखिए ऊपर जो आप क्वेश्चन नंबर में वहाँ पर दिया हुआ 4. Therefore, it will be equal to 4. It is observed that the left hand limit and right hand limit of the function at x is equal to 1
डू नॉट कॉन्साइड, देखिए अब यहाँ पर 4 आया है और यहाँ पर 3 आया है, कंसाइड नहीं कर रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अगर दोनों सेम आ जाते तब कंटिन्यूअस होता है। नाउ कम टू द केस 3। इफ 1 इज लेस देन c and c इज लेस देन 3, then fc is equal to 4 and limit x tends to c, fx is equal to limit x tends to c 4, that is 4. So therefore the limit x tends to c fx is equal to function c, means fc. Therefore function is continuous at all points of the interval 1 to 3. Now come to the case number 4. If c is equal to 3, then fc is equal to 5. अब c 3 के रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पूरा फंक्शन किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। देखिए द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 3 is limit x approaching to negative 3 fx, that is limit x approaching to minus negative 3, that is 4, and it will be equal to 4. The right hand limit of the function at x is equal to 3 is limit x approaching to positive 3 fx, that will be equal to limit x approaching to positive 3, that is 5, and it is 5 here. It is observed that the left hand limit and the right hand limit of the function at x is equal to 3 do not coincide, क्योंकि एक का 4 आया एक का 5 आया, फंक्शन ही चेंज हो जाता है। देखिए do not coincide, therefore the function is not continuous at x is equal to 3. Now come to the case number 5. If 3 is less than c and c is less than 10, then fc is equal to 5 and limit x tends to c, fx is equal to limit x tends to c 5, that is equal to 5. Now the limit x tends to c, fx is equal to fc. Therefore the function is continuous at all points of the interval, that is 3 to 10. Hence function is not continuous at x is equal to 1 and x is equal to 3. Sorry. That's all.